अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, मैंने कितने पैसों से स्टार्ट किया था, हाउ आई फेल्ट अबाउट इट, किस-किस तरीके से मैंने किस-किस तरीके की फेलियर्स का मुझे सामना हुआ एंड ऑल दैट, राइट? ये स्टोरी है मार्च 2019 की, जब मैंने इथेरियम के अंदर अपने फर्स्ट $500 इंजेक्ट किए थे एंड आई स्टिल रिमेंबर द टाइम कि फर्स्ट नाइट के अंदर ये इथेरियम जो था वो 5% 5 टू 6% के करीब क्रैश हो गया था, बिकॉज क्रिप्टोज आर ऑलवेज लाइक वॉलेटाइल, राइट? तो उनकी पोजीशन कभी भी चेंज हो सकती है एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि मैं एक रिस्क लेने जा रहा हूँ एंड इट्स अ रिस्क व्हिच कैन आइदर गिव मी अ गुड रिटर्न्स और व्हिच कैन आइदर फेस सम अदर कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैंने फर्स्ट नाइट के अंदर ही ऑलमोस्ट 5% ड्रॉप देखा एंड आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज इट वाज माई वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी भी एसेट के अंदर. And I was quite nervous about it. I spoke to one of my friend who was very pro in it, who was already making good amount of money, right? And he advised कि you should wait for it and you should look for the market, how the market is trending and how everything is going and so on and so forth. Then I did the same thing. I waited for like 10 to 15 days. Ethereum ने अपनी पोजीशन पे पहले डिप लिया, then वो वापस अपनी पोजीशन उसने पिक की. It came back to the static position जिस पे मैंने बाय किया. उसके बाद पे मुझे उस पर आई थिंक 10 to 15% का रिटर्न मिला था, कोई तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद. When I got the return, I sold that off and then I took my money around $600 and then I kept it aside for some time. I started reading about stocks. वहाँ से मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ. I was already a finance person. मेरा 5 से 6 साल का उस वक्त तक कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मुझे pretty much फंडामेंटल्स का आइडिया था कि किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं, करेक्ट? मैंने उस टाइम पे फिर थोड़ा सा रीड आउट करना शुरू किया कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनीज के बारे में, कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कहाँ पे थोड़ी सी वाइबल है. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, क्रिप्टोज आर ऑलवेज रिस्की बिकॉज उसके पीछे अंडरलाइन एसेट्स नहीं होते उस तरीके से, या उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं होते, अभी बहुत रेगुलेटेड नहीं होते, राइट? बट इन केस ऑफ स्टॉक जनरली इट इज़ रेगुलेटेड बाय SEC. देन उसकी सर्टन प्राइस होती है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिफाइन होते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे मुझे कंपेल किया कि यार मुझे क्रिप्टो से हट के स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए. ऑल्दो रिटर्न्स उसमें थोड़े होते हैं बट एटलीस्ट यू आर सिक्योरिंग योर मनी एंड देन यू कैन ग्रो इट इवेंचुअली. देन मैंने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक में की थी, इट वाज ऑन नियो इलेक्ट्रिक कंपनी. इट वाज अ चाइनीज बेस्ड EV इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर. ये लोग अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे. उस टाइम पे इनके ऑपरेशंस ग्रो हो रहे थे एंड आई इन्वेस्टेड दैट मनी इन अराउंड अलॉन्ग विद दैट $600 आई पुट एन एडिशनल $2,000. सो 2,600 के करीब मेरे पास था जो मैंने नियो में इन्वेस्ट किया था. आई केप्ट दैट मनी फॉर सम टाइम. देन कोविड हैपेंड. कोविड के बाद प्राइसेस सडनली शूट अप करना स्टार्ट की. तो मैंने मिड 2020 के अंदर अराउंड 30% रिटर्न पे वो मैंने बेचा. दैट गिव मी अनदर कॉन्फिडेंस, राइट? सो उसके बाद से देन दिस होल प्रोसेस कंटिन्यूज. Then I started looking into 5 to 10 different companies and start reading about those companies, how the stock is performing and all. मैंने पे short term position Amazon में ली. Then I took short term position in Tesla. I sold it off. Then I took short term position in one of the biotech company. I don't remember the name. Then I took short term position in Palantir and so on and so forth. So इस तरीके से मैंने अपने पोर्टफोलियो को slowly gradually grow किया. Grow करने के बाद I kept on investing. Then what happened 2022 के अंदर, again मैंने क्रिप्टोस के अंदर पैसे इंजेक्ट किए and I injected around by that time मेरे पास almost you can say from that $2,600 I made around another $5,000 to $6,000 in 2 years. वो मैंने फिर क्रिप्टोस में डालना शुरू किया. तो क्रिप्टोस के अंदर मैंने roughly around $8,000 to $9,000 इन्वेस्ट किया. Unfortunately I lost everything in cryptos and still I'm not in a recovery phase because since 2022 onwards cryptos अभी तक recover नहीं की. Then I took a break for like again 4 to 5 months and I started questioning कि यार मैंने ऐसा क्यों किया and all that stuff. Then I just finally decided I will not look into the past. Now I will focus from here onwards in the future. Then मैंने redeploy करने शुरू किए अपने पैसे दोबारा से again stocks के अंदर and I made good returns. Almost 10% to 15% a month I was making. So मैं उसको compound कर रहा था. Compounding करते I was making good amount of money, right? So currently my portfolio is in a good state. I'm in a positive state. My investment strategy is about reading top 10 to 15 companies. The ideal situation is to read top 10 companies because उसमें आपको फॉलो अप करने का, कैचअप करने का टाइम बहुत मिल जाता है एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दोस कंपनीज. सो मैं उन टॉप 10 कंपनीज को जनरली फॉलो करता हूँ, उनकी न्यूज़ को पढ़ता हूँ, व्हाट्स ट्रेंडिंग इन इट, लोग उसके बारे में क्या बात करें, क्या होने जा रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है, अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं
या आप किसी को फॉलो करें जो कि स्टॉक मार्केट को बहुत क्लोजली देखता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने को मिल जाती हैं। एंड दैट्स द रीज़न के थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, मोस्ट लाइकली यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, राइट। और उसकी बिहेवियर्स और उसकी पोजीशंस, उसकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड ऑल दैट स्टफ वो आपको रीड करने को मिल जाता है। तो मैं उसको रीड करना शुरू किया, देन आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्वड इन इट। मैंने अपने दिन के 3 से 4 घंटे उस पर स्पेंड करना शुरू किए, एंड इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। 2023 के अंदर अगेन मार्केट ने डिप लिया, आई लॉस्ट some of the money, then I took it back. So why I choose stock market over any other investment? I kept my funds in Sukuk funds, I kept my funds in government T-bonds, I kept my funds in the bank. My only debate and argument was the rate of return from these institutes are very, very less, which means you are hardly offsetting anything, and the amount of money you are making every year is very, very less. So मुझे almost 15 to 20% का रिटर्न हर साल चाहिए, maybe more than that. So one way is to put it into index, because index का जो compounding का जो return है, that is around 15 to 20%. Or the second way is you buy and you take a short term position and you sell it and then you rebuy it again. So generally I feel that stock is always a good option. There are times, there are highs and lows in the market when you really feel broken, when you really feel कि यार अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, then एक hope की नई लेयर आती है जिसके अंदर आप जाके all of a sudden अपने सारे losses को recover कर लेते हैं। तो ये phases आते हैं, you should never be afraid of it. Few things which I learned from my small investment journey. I'm not a big investor. I will not be talking about something big. I'm a very layman person. I started from nothing and I basically kind of built everything from my own. So मैं एक बहुत layman बंदा हूँ, शायद बहुत सारे लोग मेरी चीज़ों से relate कर सकते हैं। तो few things which I understand कि सबसे पहले आपने अपने emotions को कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लेकर आना, because जब भी आप किसी चीज़ को इमोशनली सोचते हैं, most likely you end up having a wrong decisions. What I meant to say emotionally, because कभी भी आप देखेंगे कोई मार्केट में स्टॉक आपका आउट परफॉर्म कर रहा होता है, 10-20% जंप ले रहा होता है, राइट। आप क्या करते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। इट टेक्स हार्डली 1 minute टू लोड द फंड इनटू द ब्रोकर ऐप एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट, राइट। बट व्हाट हैपेंस इज कि नेक्स्ट मिनट उसमें क्रैश आ जाता है, या नेक्स्ट डे उस पर एक क्रैश आ जाता है। अब आप परेशान होते हैं कि आपके सारे पैसे ज़ाया हो गए, या आपके पैसे स्टक हो गए, फॉर अ लॉन्ग टर्म पोजीशन यू आर नॉट इन अ वाइबल सिचुएशन। दैट ऑलवेज हैपेंस, राइट। So never ever think emotionally. Whenever you start thinking emotionally, take a break, shut down your laptop, shut down your PC, just sit down and relax and reflect on your decision, and then go for the decision. So always think from your mind, always investigate कि आप जहाँ पे आप पैसा डालने वाले, either it makes sense or not, it doesn't make sense. Chances are कि 90% of the times आप returns बना पाएंगे, और there are chances कि आप returns नहीं भी बना पाएंगे. So you have to be ready for both, from both perspective. Second thing which is very important, you should always put the money which you can afford to lose, which means कि अगर God forbid कोई ऐसी situation होती है, generally अगर आप S&P 500 की जो listed companies है उसके अंदर डालेंगे, so the chances are most likely you will not be in that state, right? But God forbid if anything happens, or God forbid if the prices of the stock crashes or something happens, right? You should not be in a state कि आप बिल्कुल आपके पास कुछ भी ना हो, and that is the last sum of money which you have. So you should always be in a position where you can always reinvest back, you can always kind of regrow your portfolio again, and you start reinvesting, because you always learn from these experiences, right? Either you lose money, you make money, whatever it is, but you are learning something. So always make sure that you invest that portion of money which you can invest to lose, right? This is something very critical. And the third thing which is very important is never put your eggs in one basket. Always make diversification का जो रूल है वो यहाँ पे बहुत बेस्ट अप्लाई होता है। जो फाइनेंस के लोगों को पता है डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, नॉन फाइनेंस के लिए डाइवर्सिफिकेशन इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू डिफरेंट पोर्टफोलियोज, डिफरेंट ट्रेडिंग एसेट्स, कमोडिटीज हो गई, स्टॉक्स हो गया, ETFs हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखें। डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज हेल्प्स यू इन काइंड ऑफ मिटिगेटिंग द रिस्क. रिस्क कैन नॉट बी 100% अवॉइडेड इन ऑल सर्कमस्टांसेस. आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं, तो मिटिगेशन ऑफ रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी आप अपने एसेट्स को जब भी आप अपने एसेट्स को ग्रो करना चाहेंगे, डाइवर्सिफिकेशन रियली हेल्प्स टू मेक दैट हैपन, राइट? सो ऑलवेज मेक श्योर यू पुट योर इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट एवेन्यूज, यू पुट योर इन्वेस्टमेंट इन अ वेरी सेफ एंड सिक्योर एवेन्यू, so that you can take steady returns out of it.